Yeah, hello students. How are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 13 and the chapter name is Visualizing Solid Shapes. Chapter name is Visualizing Solid Shape. Now class, let's start the chapter. That in our daily life we use many 3D objects. They also are very useful और हमारे लिए class वो क्या होते हैं बहुत useful होते हैं. क्लास सी द शेप ऑफ अ रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल. क्लास इसकी शेप क्या है वो रोल कर रहा है उसकी रोड की जो शेप है उसकी सिलेंड्रिकल तभी तो उसका सरफेस कैसा है क्लास प्लेन सरफेस है. इट इज यूज टू प्रेस एंड प्लेन द सरफेस. क्लास उसको सरफेस कैसा है उसका प्लेन तो वो जो प्लेन करेगा उस सरफेस को क्या करता है प्लेन करता है. ओके नाउ द शेप ऑफ अ रूम इज अ क्यूबॉइडल. क्लास क्लास कैसी है इसकी क्यूबॉइडल रूम की शेप है. ओके क्लास यू कैन सी किस क्या है इसकी शेप क्यूबॉइडल. द शेप ऑफ अ डबल बेड एंड अलमीरा आर आल्सो क्यूबॉइडल so they are stable at their place in the room. क्लास इसकी वजह से क्लास क्या है वो स्टेबल है. अंडरस्टैंड. so dimension represent a measurement in space. For example, the height, width, length of something. A straight line has no one dimension. क्लास कितना होता है उसका डायमेंशन वन होता है. Length, a rectangle has two dimension, length and width, and a matchbox has three dimension, length, width and height. Here the rectangle is a 2D shape while the matchbox is 3D shape. Most of the 3D objects can be give 2D shapes. Now class come on introduction. A solid is any enclosed three-dimensional shape, that is it has three dimensions length, breadth and height. We have already learned about 3D shapes in earlier classes. Let us revise all important terms related to them in brief. Now class shapes, number of edges class ये क्या है cuboid. So class 2 होती है और number of vertices 6 और number of vertices 8 और faces कितने होते हैं 6. Now class फिर क्या पढ़ा था हमने क्यूब के बारे में. नाउ क्लास कम ऑन क्यूबॉइड. क्यूबॉइड 12 8 एंड 6 रेक्टेंगल सिलेंड्रिकल 2 और क्लास इसमें क्या होता है एक भी वर्टिसेस नहीं होता सिलेंड्रिकल में. टू फ्लैट एंड वन कर्व सरफेस. कौन वन फ्लैट सरफेस. नाउ स्पेयर में नील कुछ नहीं होता वन कर्व सरफेस होता है क्लास बस उसका. नाउ ट्रायंगुलर प्रिज्म में 9 6 और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस लेटरल फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर faces. Now rectangular prism class 12 8 और 6 क्या होते हैं उसके 6 rectangle faces होते हैं. Now triangular pyramid 6 4 और अगेन उसके faces होते हैं 4 vertices होते हैं. ओके क्लास और edges होती हैं उसकी 6. Come on exercise 13.1 question number 1. Identify the following shapes and write the name of the solid it represents before each picture. क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास ये क्या है ये अलमीरा है और हमसे उसने पूछा नेम ऑफ द सॉलिड. सो क्लास अलमीरा किसकी बनी हुई है क्यूबॉइड. ओके क्लास और ये बॉल है इसका जो वो है ये है स्फेयर. अंडरस्टैंड क्लास. और ये बॉटल क्लास सिलेंडर. ओके नाउ क्लास रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स. अ क्यूब हैज डैश फेसेस एंड डैश एजेस. क्लास मैं आपको क्यूब पे लेकर जाती हूँ. कितने फेसेस होते हैं 6 और एजेस कितनी होती है 12. ओके क्लास 6 faces and 12 edges. Now class a cone has dash vertex and dash edges. Cone class अब हमने cone का पढ़ा था. One vertex and one edges. Understand class? Okay class. Rest of the parts do yourself. Come on. Next for building 3D shapes. Class 3D shapes के लिए जो हम nets का use करते हैं. Net of a three-dimensional figure is a shape that can be cut out of a paper or cardboard on कार्डबोर्ड एंड फोल्डेड टू मेक अ 3D शेप. क्लास उसको हम कट करके क्या बनाते हैं फोल्ड कर देते हैं क्या बना देते हैं 3D शेप बना देते हैं. नाउ क्लास इन फैक्ट नेट्स आर टू डायमेंशनल पैटर्न्स ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर. दे हेल्प us to see the region or faces that make up the surface of the figure. Now net of a cuboid we may have more than one net for the same cuboid. Below is given another net of the above cuboid when folded along the dotted lines. क्लास हम उसको फोल्ड करेंगे शेल
give the same cuboid as above. Understand? Now class, when we fold this net along the dotted lines, we get a cuboid. Class, हम उसको अगर हम उसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी. Now net of a cylinder when we roll AB, AB को हम क्लास रोल करते हैं CD की तरफ to make a cylinder. Okay, तो क्लास क्या बन जाएगा, हमारा एक सिलेंडर बन जाएगा. Now net of a right prism when folded along the dotted lines, class उसको हम fold कर देते हैं along the dotted lines, the given net will form a right prism like the one shown alongside. Understand? Yes class, come on, exercise 13.2 question number 1, match the shapes with their nets. class अब क्लास हमें उनके नेट्स के साथ उसको मैच करना है क्लास सी. ओके, अब क्लास ये क्या है, अब हम इसको किससे मैच करेंगे, दैट इज क्लास दिस. नाउ कम ऑन, क्यूबॉइड की जो शेप है वो लाइक दिस. नाउ दिस इज द prism and this is cylinder for this. Understand class? Now class, come on question number, yes, come on class, question number 2, from cubes from the following nets. क्लास हम उसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब क्लास हम उसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. ओके क्लास, अब इसको हम फोल्ड करेंगे एंड देन हम उसको फोल्ड आउट करके हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है. ओके क्लास, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म क्यूबॉइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स. यस क्लास, हमें इस फॉलोइंग नेट से क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है. तो क्लास हम उसको पहले हम एक रेक्टेंगल्स को फाइंड करेंगे, देन हम अपने क्यूबॉइड को फाइंड करेंगे एंड मेक कर देंगे. Understand class? Rest of the part do yourself. Come on, techniques of drawing solid shape. Come on class, the following two techniques are commonly used to drawing solid shapes. Class, first technique क्या है, isometric dot paper, और दूसरी है हमारी use of graph paper. Okay class, now use of isometric dot paper पहले हम देखते हैं. Now class, it is simple to draw two dimensional object on a paper as it has two dimensional head, height और class क्या है, width. But objects in real life have a third dimension. क्लास रियल लाइफ में क्या होता है, क्लास थर्ड डायमेंशन होता है. वो तो एक पेपर की बात कर रहे थे हम. आप क्लास रियल लाइफ में थर्ड डायमेंशन डेप्थ विद नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग. In isometric drawings, all three dimensions are represented in paper. Isometric graph paper, 3D graph paper is a triangular graph paper with dots forming a 60-degree grid of small triangles. Example, draw the solid using the top, side and front views given below. क्लास टॉप ये हो गया हमारा, साइड हो गया, फ्रंट ये हो गया. तो क्लास स्टेप 1, यूज द टॉप व्यू, ड्रॉ द बेस ऑफ द ए बाय 3 रेक्टेंगल. क्लास सी, ये क्या हो गया हमारा, टॉप हो गया. नाउ स्टेप 2, ऐड एजेस टू मेक द बेस ऑफ अ सॉलिड फिगर. क्लास सी, अब उन्होंने उस एजेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. नाउ यूज ऑफ ग्राफ पेपर. Like isometric dot paper, we can use a square paper to draw solid figures. Example, draw a rectangular prism with length 5 units, height 2 units and width 3 units. Use a square graph paper for the drawing. Class, draw a parallelogram with sides 5 units and 3 units. Class, हम पहले क्या करेंगे, parallelogram को draw करेंगे like this. Then this is the top of the prism. ये क्या है क्लास, top है. Now start at one vertex. Okay. Draw a line passing through two squares. Repeat it for other 3 vertices. Repeat करेंगे हम उसको. Draw the hidden edges and dashes line. Class, hidden edges. हमने उसको dash the edges किया and connect the ends of line to complete the prism. अब क्लास उसको हमने connect कर दिया. ये क्या है हमारा, hidden edges है. Come on, exercise 13.3, question number 1. Draw an isometric sketch of cuboid of dimension 3 into 2. 4 into 3 into 2. प्लस यहाँ पर हमने देखो आइसोमेट्रिक पेपर से इसको बनाया था. तो क्लास, यस क्लास, हमें उसका डायमेंशन क्या रखा है, 3 2 4 या 4 3 2. क्लास, अब आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं. हमें क्यूबॉइड को इसमें ड्रॉ करना है लाइक दिस. नाउ क्लास, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 2 और 4, जिनके डायमेंशन को लिख सकते हैं. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ अ क्यूब ऑफ डायमेंशन 4 यूनिट्स. क्लास, उसकी यूनिट्स को हम 4 में रखेंगे. हमें क्यूब को फॉर्म करना है. अंडरस्टैंड क्लास, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट, 4 यूनिट और 4 यूनिट. अंडरस्टैंड क्लास? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू योरसेल्फ.
Now class, your chapter is completed. Prepare it very well and